हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सौम्या है एंड आज की रीडिंग है आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यानी कि आपके जो पार्टनर है या जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंड दिस इज़ अ लव रीडिंग। ये जो है ये लव रीडिंग है एंड ये पिकअप पाइल है, पिकअप डेक है। तो आपको इनमें से दो डेक्स चूज़ करनी होगी। डेक वन इज़ दिस blue one and deck 2 is another blue one, so choose between two decks, deck 1 and deck 2. Okay everybody, so relax and you can pause the video, and if you want to choose both deck you can choose both deck. If anything resonate with you, do let me know. Okay everybody, so let's start with our pile 1. What is there for our pile 1? What are their person thinking currently? What are the person messages for them? Let's see. What are the messages for pile 1 from their person? What are they currently thinking? What are pile 1 messages for their person? What are pile 1 messages for their person? What are their person thinking? Spirit, please guide me. Angel, please guide me with a relevant answer for them. Two of Cups, reverse, not a good card. Your soulmate is stopping himself to come to you. They want to come to you, but right now they don't want to come to you. What are their person thinking? What are their person thinking for pile 1? Angel, please guide me for pile 1. Too many cards fall off. What are their person thinking for pile 1? What are their person thinking for pile 1? Angel. Angel, please guide me with one card for pile 1. What are their person thinking for pile 1? Okay. Of Swords. And end of the deck, 3 of Wands. So it is Knight of Swords for pile 1. 4 of Cups. Okay. 2 of Cups reverse as I told before, and 3 of Wands. Look like they are stopping themselves because of the third party situation in your life. Your relationship must be a long distance relationship. आपका जो relationship है वो long distance है pile 1. Okay. And they are thinking about you very deeply. वो बहुत emotional है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो करंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो मूव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनके आसपास बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ ने उनको घेरा हुआ है एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। वो कप देने से आपको डर रहे हैं, ऑफ़र देने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं पाइल 1। अदरवाइज दे वांट टू ऑफर यू बट दे आर देमसेल्व्स वेरी स्केर्ड कि क्या करें वो, कि अगर वो जाएंगे आपका रिएक्शन क्या होएगा पाइल 1। Otherwise they are very passionate about you, they are very addicted towards you, they want to come towards you very fast pile 1. Okay, and this watches you from far and they are definitely stalking you. Let's see what our love card says about you pile 1. Then we will check our messages, my handmade messages for you all. They are channel messages, so we will definitely check it. Let's see what is there from love card for our pile 1 viewers. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. So they have a romantic feelings for you. As I said, they are very emotional to you, they want to come towards you but they are stopping to come towards you pile 1. Okay, your feelings are real and worth exploring.
with this person it is very much real and worth exploring. ओके गाइस, जो भी आप जिसके बारे में सोच रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा रियल लव है, ट्रू लव है आपका, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं आपसे. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू एंड दे वांट मोर रोमांस विथ यू. ओके, so let's see what are your messages for pile 1. What are the messages for pile 1 people? What are the messages for pile 1 people from the person? What are their person messages for the person? Old memories are haunting me. Look, okay, your person, they are haunted by your old memories. As I said, they remember you a lot. They want to come towards you, but they can't offer you because of the third party situation. Let's see 2 more cards for your messages. What are the pile 1 person messages for them? What are the pile 1 messages from the person? What are the pile 1 messages? Okay, I am sorry. They want to say you sorry. As I told before, they are very much scared and their old memories are haunting them and they want to come towards you. They are stalking you. They have a very soul hearted feelings for you, romantic feelings for you, and they are having a kind of realization कि उन्होंने आपके साथ क्या किया. जिनका भी है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं. एंड आवर थर्ड कार्ड इज आई एम चेंजिंग फॉर यू. लुक लाइक दिस person is from past only and he want to change for you. So it is that they want to change for you. This is not for everyone, this is for few people and ये आएंगे ज़रूर आपके पास, बट ये अभी अपने आप को रोक रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ने इनको घेरा हुआ है पाइल 1. ओके, लेट्स सी अनदर वन. व्हाट इज़ देयर फॉर यू? They are confused. They are no. As I said, they are not coming right now. They want to come, but they are not coming right now. So they are saying no, I can't come right now. Pile 1. So this was our pile 1 reading. Hope you liked pile 1. You please do comment, share, and like my channel. Subscribe if you like my reading. Thank you, pile 1. Now let's see what is there for our pile 2 people. What are their personal current feelings and their messages for you? So let's see that what it is. Angel, please guide me. Angel, please guide me for pile 1. What are pile 1 person's feelings from them? What are pile 2? What are pile 2 person's feelings for them? What are pile 2 person's feelings for them? What are pile 2 person's feelings for them? Okay, I got 3 cards for pile 2. 6 of Pentacles, the Empress, and the Lovers. And end of the deck is the Strength. Okay, so for pile 2 I would say that your person are having financial issues currently. Okay, they are like dealing with too much of financial problems. They want to give you lots of देर पेनी एंड सैलरी टू यू, जो भी उनके पास आए, इसलिए वो अभी अर्न कर रहे हैं. और जब वो आएंगे आपके पास तो वो अर्न करके आएंगे. एंड वो जो है आपको, आपके जो पर्सन है आपको एम्परर और एम्प्रेस के रूप में देखते हैं. ओके, ये जो भी है आप जिसके बारे में सोचो, चाहे वो ओल्ड लव हो, न्यू लव हो, और योर बेस्ट फ्रेंड, योर फ्रेंड, दे सी यू एज अ एम्प्रेस. एम्प्रेस यानी कि क्वीन की तरह वो देखते हैं आपको, कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस के साथ हो,
एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइप के लड़का या लड़की हो, फर्टिलिटी से भरे हुए। ओके, एंड ये जो है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके गाइस, सो पाइल 2 दे आर योर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको वो बहुत स्ट्रांगली लेना चाहते हैं आगे जाकर, एंड आपका जो कनेक्शन है वो जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड वो ये तक जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस कनेक्शन को लेके। सो वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर आगे जाके बढ़ेंगे स्ट्रांगली। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट angel romance card says for you, love romance cards for pile 2. What the person want to say, what pile 2 person want to say, what pile 2 person want to say to them, what pile 2 person want to say to them. Angel, please guide me. Angel, please guide me. What pile 2 person want to say about them? What are their feelings? Angel, please guide me for pile 2. Please guide me with relevant answer. You deserve love. You are lovable. Second, I got unrequited love. So is like for pile 2, unrequited love. There is not attraction or chemistry to keep relationship going. Okay, आपके पर्सन को ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, बिकॉज उनको भी देने को कुछ है नहीं इस वक्त। सो दे फील कि ये अनरिक्वायर्ड है, मतलब कुछ है ही नहीं देने लायक, एंड तो वो फाइनेंशियली भी प्रोवाइड करना चाहते हैं आप लोगों को पाइल 2। तो it is like that, there is like little bit unrequired love between you both. You need to build your chemistry up, pile 2. And second thing I see, you deserve love. Angels are saying you deserve love, pile 2. Okay, like आप लोगों के बीच में हो सकता है मनी इश्यूज़ के बिटवीन लव ख़त्म हो गया होगा, बट देर आर चांसेस ऑफ लव। यू बोथ डिज़र्व लव एंड यू ऑल्सो डिज़र्व लव, पाइल 2। जो भी ये देख रहे हैं ये आप ही के लिए है। ये जो है ये आपका ट्विन सोल कनेक्शन है। यहाँ पे प्यार ख़त्म हो गया होगा किसी रीज़न से, मे बी जो मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बिटवीन, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई होगी। सो अगेन आई एम सेइंग यू डिज़र्व लव, पाइल 2। ये जब आएंगे आपके पास पूरा चेंज होकर आएंगे, अच्छे से आएंगे अगर आएंगे तो। ड्यू टू हिज फाइनेंशियल इश्यूज़ और हर फाइनेंशियल इश्यूज़, दे आर नॉट मूविंग ऑन। So you are lovable, you deserve love. Now let's see what are pile 2 messages from their person. What are pile 2 messages for their person? Angel, please guide me. No, they don't want to come right now because of their financial issues. What are pile 2 person want to say them? What are their person want to say them? What pile 2 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 person want to say them? So many cards are falling down, guys. आपके पर्सन तो आपको बहुत कुछ बोलना चाह रहे लग रहा है। एंजल, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल 2। व्हाट देयर पर्सन वांट टू से देम। प्लीज़ गाइड मी विद वन कार्ड, वन रेलेवेंट आंसर फॉर पाइल 2। यू आर माई हैप्पीनेस एंड माई ड्रीम कम ट्रू, पाइल 2। ये आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बस थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ट्विन सोल कनेक्शन है, सो ये ज़रूर आएंगे आपके पास। ओके, दे सी यू एज अ ड्रीम कम ट्रू।
Now let's see another two messages for pile 2. What their person want to say then. Okay, another two card fall for you. I am changing for you. इन्होंने लगता है आपको पास में बहुत ज़्यादा हर्ट किए बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल इश्यूज, मे बी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही होगी आप लोगों की पाइल 2 में. तो बट दे वांट टू चेंज फॉर यू एंड दे विल come to you with lots of pentacles, money with them, and they will definitely offer you a cup. And they are very sorry for what they did with you before. And another card is here. Old memories are haunting me again, just like pile 1. You can check out pile 1 if you want to. Let's check out another card for pile 2. What is there for pile 2? What is there for pile 2? What is there for pile 2? Angel, please guide me. They don't want to prove the world that they love you a lot, guys. I don't need to prove to this world for you. So be happy, pile 2. This is for you. Lucky you, pile 2. They love you a lot. आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं आपको बहुत चाहते हैं. Okay, this was my pile 2 reading. Hope you liked my reading, pile 2. Please do comment below section, like my section, and subscribe my channel, share with your friends and family. So hope you all like my reading. Thank you everybody. See you on my next video. Tata, bye bye.